Okay, so in today's video, we are going to do preparation of salts. This is part two of the chapter acid, bases, and salts. So if you've not watched the first part, it doesn't matter actually because कुछ related नहीं है. So you can still watch this first and that later. So yeah. Um, they have given it in the same chapter, but actually it is nothing new for you all. You have already learned whatever I'm going to speak now. So first, before we begin, preparation of salts and 3B also will do. 3B, very small, just equations, yes. Okay. So before we begin with preparation of salts, one thing I would like to tell the remember few things. Okay, so points to remember just टेक्स्ट बुक में भी दिया है बट जस्ट मेकिंग इट क्लियर पॉइंट्स टू रिमेम्बर sodium, potassium, and ammonium salts are always soluble. Now, what do you mean by always soluble? They never form a precipitate, in short. Precipitate क्या होता है? Insoluble होता है ना? So they will never form a precipitate. So whenever you are asked कि soluble salt बनाओ या कुछ भी बनाओ, so ये आपके मन में आने चाहिए. ये it is something related to this. So this is a very interesting topic only. ये और ये चैप्टर में से यही आता है actually. फर्स्ट पार्ट का सब doesn't come usually. वो थियरी हो मोनो बेसिक एंड ऑल दैट इट डजंट कम. इसमें से यही आता है 3 marks के लिए देता हूँ 6 marks also. We may get say prepare the salts, give equations and also it is actually fun also, like you need to think a lot. So then is all nitrates all nitrates and nitrites always soluble. All कोई भी हो नाइट्रेट है soluble. So again, what do you mean by soluble? Precipitate नहीं बनेगा. So then we have so in general all bicarbonates are also soluble. All sulfates and chlorides are also soluble. So exception to solubility of number one chloride. So exception to solubility means now we are writing which are insoluble. Don't get confused. PbCl2, AgCl, AgCl ही बनता है AgCl2 नहीं है AgCl ही होता है AgCl, CSO4, CaSO4 and we have also barium sulfate. ये बाद में आएगा barium sulfate. It's a very important reagent for testing sulfates. Okay, so these are all what? These are exception. Mean they are all insoluble. PbCl2 is actually soluble in hot water. तो bracket में दिया है but they target it sometimes. So याद write it. Second. They are all insoluble. Okay, insoluble. Insoluble की बात कर रहे हैं but PbCl2 is soluble in hot water. Normal में नहीं होता है. In hot water, however, it is soluble. So now we talk about exception to the solubility of sulfate. अरे यार ये गंदा कलर है. हाँ ये वाला अच्छा. Sulfate. Which all sulfates are exception to solubility, which means they are insoluble.
नंबर 1 PbSO4, हाँ ये भी एक नोट करो समवेयर कि ऑल लेड सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल। 10th तक तो ऑल लेड सॉल्ट्स इनसोल्यूबल, ऑल Pb salts insoluble. I write something in the bracket here. Think for 1 second कि मैं क्या लिख सकता हूँ। 5 seconds think और पॉज करो, थिंक करो क्या लिख सकता हूँ मैं। एक्सेप्ट क्या होगा? एक्सेप्ट लेड नाइट्रेट, ऑब्वियसली अभी मैंने लिखा ना ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल and there is no exception to that rule, which means that except PbNO3 twice, all other salts of lead are insoluble. So that is why I like this concept. मजा आता है इसमें. Okay. PbSO4 है, then again oh one second ना, मैंने ऊपर ऊपर सल्फेट ली थी, सॉरी सॉरी, ये दो याद नहीं आनी चाहिए एक्चुअली, these are only HgCl है तो ठीक है, sorry forgive me. AgCl, HgCl. Now we have तो ये इधर आएंगे PbSO4 then CaSO4 and barium sulfate. PbSO4 is however insoluble even in hot water. ये एक distinguish है. They can tell you distinguish between PbSO4 PbCl2. Okay. So this was general thing. Then all sulfide, carbonate, oxides, hydroxide, phosphates are insoluble. So textbook में एक table जैसे दिया है. I tried to jot down the important things which you must remember. I will, if you want, I'll revisit all of them once. So all sodium, potassium, ammonium salts are always soluble. All lead salts insoluble except PbNO3 twice. Why except? Because next point, all nitrates and nitrites are soluble. Exception to solubility of chlorides में है PbCl2. These are all insoluble chlorides. PbCl2 is soluble in hot water. Sulfate के exception में PbS. These are all insoluble sulfates. Insoluble even in hot water. Lead sulfate, but lead chloride is soluble in hot water. So this was the general few things. We have not even started with the topic yet, but ये सब याद रखना important. Yeah. So now we come to preparation finally. So there are 5 methods of preparation. Textbook says 6, but we'll do 5 only. Sixth one is not used much. I will go through once. So first one, first method, first method is synthesis, or we call it as direct combination. Direct combination, also called as synthesis. दिया है क्या टेक्स्ट बुक में? I don't, हाँ है. Synthesis, वेरी इजी. अभी ये सब याद रखने पड़ेंगे. इक्वेशंस रट लो, सब इक्वेशंस बाय हार्ट होने चाहिए. Like even if 5 years later also you should remember all these things. So remember it like पूरा रट लो. सो मैंने भी रटा ही था. देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन दिस. अभी इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? ये इसमें जिंक में सल्फर डाल रहा हूँ, जिंक सल्फाइड बन रहा है. कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. भी है तो है, रटना पड़ेगा. दैट इज वाई केमिस्ट्री में रटना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दो से रटना वटना नहीं है तो दे डोंट नो हाउ टू डू केमिस्ट्री. Okay, so these three are by the way insoluble. Again, insoluble. All these three, तीनों के लिए same thing. And we have Fe plus Cl2, which will give us FeCl3. ये 100% either in your school prelims, boards, किधर ना किधर तो इक्वेशन आने वाला है. MCQ
fill in the blank, कुछ ना कुछ करके they will try to confuse you with FeCl2, but direct synthesis में it is always FeCl3, remember. So let us balance this now. So now see, इधर 2 है, इधर 3 है. If you want to make them equal, LCM देखो 6 है, तो मैं इधर अगर 3 कर दूंगा तो 6 में हो जाएगा, तो इधर भी 6 हो गया, तो इधर मुझे 2 करना पड़ेगा. मैं 2 करूंगा तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, Fe2, डन. Now same balancing goes with aluminium also, AlCl3. Why? Because their valencies are same. And these two किधर लिखो. Okay, so these two are soluble. These are soluble. तो याद रखो 5 इक्वेशंस है. सो लेट अस नंबर लाइक, ओके फाइन फॉरगेट. 5 इक्वेशंस है इसमें. 1 2 3 4 5. 5 इक्वेशंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 100% एक तो पक्का आएगा, किधर ना किधर तो FeCl3 तो आएगा ही 100%. ओके. So now we have the second method, which is called as simple displacement or only displacement. ये सब you have already done it in your lower classes, but now you have actual thinking वाले questions. Okay. This forms FeCl2 plus H2. Pay attention, FeCl2, FeCl3 था ऊपर, it was FeCl3. ध्यान से देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है. ये they ask for sure, this will be asked 100%. तो ये क्लियर रखो माइंड में कि डिस्प्लेसमेंट में FeCl2 आएगा, सिंथेसिस में FeCl3 ही आएगा. एंड इसमें हाइड्रोजन गैस भी समटाइम्स दे आस्क बाय गिविंग एग्जांपल, सम ऑब्जर्वेशन दैट अ गैस इज इवॉल्व्ड और पॉप साउंड इज हर्ड, सो वैसा जैसे राइट इक्वेशन, तो वो वैसा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड. Same equation we can have with H2SO4 also. This will give us ZnSO4 plus H2. So you can do this same with iron, magnesium and zinc. Let's try for magnesium also. Complete हो जाएगा set. Magnesium plus can use any acid. I'm using HCl only again. It will give us MgCl2 plus H. So Fe, general idea is FeZn or Mg plus HCl or H2SO4 will give salt plus H2. Lower salt. I'm not writing now, remember this. It will give you the lower salt. Lower salt means lower valency वाला salt. इसलिए synthesis में आया FeCl3, इसमें आएगा FeCl2, lower valency वाला salt. So this was displacement. Now third and an important one is called as precipitation. Precipitation. So what is precipitation? First let's understand. Precipitation means I take two soluble salt solutions together. Two soluble होने चाहिए. एक insoluble है, soluble है, doesn't work then. Two soluble if I take together, add it, mix it, then I will get एक soluble solution again. और उसमें एक insoluble solution होगा. So generally see, A plus B is giving C plus D. Then A is soluble, B is soluble, C is also soluble, but this D is insoluble. It forms a precipitate. Precipitate is mainly insoluble, मतलब dissolve नहीं हुआ है, सब बच जाता है उधर. You can not say solid, but it doesn't dissolve in the liquid. So that is the main difference. ये precipitation conceptually इतना ही है, nothing more. इसमें reactions. Reactions may you can have n number of reactions. Actually, I'm taking up a few
बट देन वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट यू कैन मेक, मतलब मैंने ये रिएक्शंस कभी बाय हार्ट नहीं किए, बिकॉज जस्ट यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ। हम करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हो जाएगा क्लियर। ओके, सो आई कैन टेक लेड नाइट्रेट विच इज सोल्यूबल, मैंने बोला है, plus if I want to take one more soluble salt, now think any soluble salt, uh, I will take Na2CO3, but मैंने तो बोला था कि all carbonates are insoluble, उसके पहले ये भी बोला था कि all sodium salts are always soluble and there was no exception to that, so वो याद रखो अच्छे से। This will give me 2 nano 3 plus क्या बचा है, PbCO3. PbCO3 is insoluble. Why? Because all lead salts are insoluble, right? One more we will take now. Calcium sulfate is already insoluble, so we cannot take calcium sulfate. We'll take calcium chloride. Textbook also says the same. With which salt we'll take now? We can take any salt we want, but let us take Na2SO. Okay, Na2SO4. We can't take NaCl, but NaCl we cannot take because then reaction ही नहीं होगा ना. Chlorine will not react. Double display, ये essentially double displacement है, like AB plus CD is giving us AD plus BC. But ये अगर same है तो ये reaction ही नहीं होगा ना. So that's why we cannot react like anions or like cations also. I hope you got what I'm saying. So yes, so we have CaCl2, Na2SO4 will give us CaSO4, which will be a precipitate, plus 2NaCl, normal soluble salt solution. Uh, Now you can make n number of combination, like zinc nitrate ले लो, nitrates always soluble, zinc nitrate को ammonium chloride के साथ ले लो, ammonium salts also always soluble, but the main idea is कि it should be a soluble salt, soluble 1 salt plus soluble 2 salt is giving another soluble 3 salt plus insoluble precipitate, ये main idea। बस इतना याद रखो। फिर वो कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये थोड़ा दिस इज लिटिल कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि वो कैसे कौन से लेने हैं। वो इफ यू आर गुड एट इट ना देन ही आएगा, हाउ विल बी गुड एट इट, मेमोराइज, याद रखो, सब एक्सेप्शंस याद रखो कि ये है इनसोल्यूबल तो है इनसोल्यूबल, सोल्यूबल है तो सोल्यूबल है। Okay, so fourth method is neutralization. Now this again you have done it in your lower standards. Neutralization is of two kinds. So first is normal neutralization only, in which we will use insoluble base. Which is insoluble base? Copper and zinc. So copper sulfate, zinc sulfate, copper nitrate. We will use it to form these salts. The insoluble base will be only CuO, ZNO, CuOH twice, नाइट्रेट सोल्यूबल है ना हमेशा, तो वो कैसे इनसोल्यूबल, और वो बेस थोड़ी है, सॉल्ट है वो, इवन आई थोड़ा गॉट मिक्स्ड अप। हाँ, सो CuOH twice and zinc hydroxide. So we will mainly use these elements, but yeah, so we can use Pb also actually. Textbook is saying Pb, so we'll use Pb. 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 नाउ इसका क्या मेन आइडिया है, इनसोल्यूबल बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन का पार्ट 1 है। सो इनसोल्यूबल, इसका मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया है इनसोल्यूबल
base plus acid will give soluble salt plus H2O. H2O तो पता है ना न्यूट्रलाइजेशन से या salt plus water आता है. So we take a few examples. So suppose we have copper oxide plus added to H2SO4. What will I get? कॉपर सल्फेट सोल्यूबल है. क्यों सोल्यूबल है? एक्सेप्शन में नहीं था, याद है? एक्सेप्शन में क्या थे? कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, लेड सल्फेट. बस ये तीन ही इनसोल्यूबल सल्फेट है, बाकी सब सल्फेट्स सोल्यूबल. हाँ, और H2 है. सो दिस इज द सोल्यूबल सॉल्ट. देन वी हैव अभी PbO. अब PbO के साथ एक सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए सोचो, चाहिए तो पॉज करके सोचो. H2SO4, why will I not write H2SO? And why will I write HNO3? Think. Even HCl I won't write. Hope आपको अब तक पता चल गया होगा. Because only lead nitrate is soluble and we want a soluble salt. और लेड का तो एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट. तो वो लाने के लिए हमें जो जो वो देगा वो यूज करना पड़ेगा ना. सल्फेट यूज करके किधर से नाइट्रेट लाएंगे, किधर से सोल्यूबल सॉल्ट. ओके. So we'll have, that's why we will only use HNO3 with this. अभी this is where if you are good at it ना, then it is very easy. अभी ये रटने का पार्ट नहीं था कि PbO plus HNO3 है, ये समझने का पार्ट था. एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि why I'm using HNO3 with PbO, क्योंकि I want lead nitrate. Why lead nitrate? वो रटा होना चाहिए. lead nitrate ही soluble है इसलिए. So equations also, if you understand the entire story what is going on, it's very real easy. It's not memorization. English memorize मत करने जाओ. PbO plus HNO3. Think of it as a story. What's going on? Okay, anyways, PbNO3 twice plus H2 balancing. PbPbOO NO3 दो है तो इधर balanced. सेम रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ भी है. अगेन विथ लेड हाइड्रोक्साइड वी विल यूज ओनली HNO3. व्हाई? वी वांट लेड नाइट्रेट, सो वी विल यूज व्हाट वी विल रिक्वायर. व्हाट वी विल रिक्वायर? विल रिक्वायर नाइट्रेट रेडिकल. नाइट्रेट रेडिकल आएगा HNO3 से. सल्फेट और क्लोराइड यूज करके किधर से हमें सोल्यूबल मिलने वाला है? वी वांट अ सोल्यूबल सॉल्ट. दैट्स द एंटायर आइडिया ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. So second thing in neutralization is titration. Nothing different. ये भी आपने सुना होगा पहले. टाइट्रेशन में क्या है ना, सोल्यूबल बेस है. बस इतना ही डिफरेंस है. सोल्यूबल बेस और इन शॉर्ट अल्कली. उसमें इनसोल्यूबल बेस था, इसमें सोल्यूबल बेस है. दैट्स इट. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो सोल्यूबल बेसिस कौन से हैं? ऑल any salt soluble, but I will write the names only here, specific. So we have NaOH, we have KOH, we have NH4OH. So we react them with any acid we want plus either HCl, or we can use HNO3, or we can also use H2SO4, and we will get a salt and water. One example only I'm writing. ये easy है, इसमें कुछ difficult नहीं है. Most basic example NaCl plus H2. Soluble base, acid, soluble salt, water. Balance. Balance. NaOH. नहीं, balance ठीक था, sorry. दिस वॉज टाइट्रेशन. बस इतना ही है. इक्वेशंस अभी ये रटो मत. यू रिमेंबर कि KOH और H2SO4 अगर उन्होंने बोला, डोंट से कि यार ये तो बोला ही नहीं था. तो बनाओ खुद से इक्वेशन. उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात. इतना याद रखो कि टाइट्रेशन में NaOH, KOH, NH4OH विद एनी एसिड. इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस अभी नहीं है कि जैसे उसमें लेड के साथ HNO3 था वैसे. But just remember कि you will always use either NaOH or KOH or NH4OH.
Then one more method of preparation they have given, which is action on acid, but अभी के लिए I'm not doing it action because वो chapter 7 में सब equations आएंगे. So right now there is no point doing action on acid. I'm just writing it, making a note of it. बट वो भी इक्वेशंस हैं, अभी इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है. लाइक जिंक कार्बोनेट प्लस HNO3 विल गिव जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2. सो यू विल जस्ट हैव टू रीड इट वंस एंड चैप्टर 7 में जब आएंगे तब रिएक्शंस रिमेंबर मेमोराइज रट्टा. ओके. तो इसमें वन मोर थिंग इज देयर. उन्होंने एक्चुअली इसके बीच में डाला था बट आई पर्पसली इग्नोर्ड इट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट इन द एंड. So important thing is this is important. This comes 100%. This comes 2 marks के लिए डायरेक्ट यही पूछेंगे दो इक्वेशंस. Insoluble salt from insoluble salt. ये कैसे बनाए? अब तक तो वी वर सीइंग प्रेसिपिटेशन में भी एक सोल्यूबल सॉल्ट दो सोल्यूबल सॉल्ट चाहिए. फिर बाकी न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में भी यू नीड सोल्यूबल. उसमें तो सॉल्ट नहीं होते हैं एनीवेज बट मेनली प्रेसिपिटेशन में. सो कैसे बनाए? सपोज आई आई टेल यू कि प्रिपेयर PbCl2 from an insoluble. So any PB का actually we can take PbO. How will you make it? PbO तो insoluble है, प्रेसिपिटेशन कर नहीं सकते, तो क्या करें? सिंपल. What do you want for precipitation? Soluble salt चाहिए ना. Soluble salt कौन सी है? अभी ध्यान से सुनो what I'm saying. This should go on in your mind when you're solving this kind of question. And this direct comes for 2 marks. Direct. बस दो इक्वेशन लिखो खत्म. Move on. Done. Okay. So you want PbCl2 from PbO. But PbCl2 कैसे आएगा सोचो. प्रेसिपिटेशन से वी विल गेट PbCl2. प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? सोल्यूबल सॉल्ट. अभी वो सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा हो सकता है? लेड का. ऑफ कोर्स PbNO3 ट्वाइस विच इज द ओनली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ लेड. तो ये कैसे बनेगा? कुछ आइडिया है? PbNO3 ट्वाइस कैसे बनेगा? PbO से एड इट टू HNO3. हमें थोड़ी है खुद ऐड करना है, लिखने में क्या जाता है? एड इट PbNO3 ट्वाइस डायरेक्ट. बनने से मतलब है वो बस. यू डोंट थिंक कि HNO ऐसे कैसे HNO3 डालो. अभी वी डोंट हैव टू प्रोवाइड एनीथिंग ना, तो उसमें क्या है. सो बैलेंस्ड है होपफुली. तो यू गेट PbNO3 ट्वाइस. अभी हो गया ना काम. सोल्यूबल सॉल्ट मिल गया. PbNO3 ट्वाइस से क्या चाहिए मुझे? PbCl2 चाहिए, मतलब क्लोराइड रेडिकल लगेगा. क्लोराइड क्लोराइड के साथ एनी सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड कुछ भी ले लो. आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड. तो ये बनेगा NaNO3 प्लस PbCl2. बैलेंस्ड है अभी. बस दिस वाज 2 स्टेप आंसर. इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं. 1 मार्क 1 मार्क. वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग which is prepare PbCO3 from let's say prepare. Okay, we'll change. Prepare PB. हमने अभी कौन सा किया? We did PbCl2 ना, so we do PbSO4 from PbCO3. Can do either way also, सेम ही होने वाला है. नाउ थिंक. PbSO4 बनाने के लिए मुझे प्रेसिपिटेशन लगेगा. PbSO4 इज अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेशन के लिए मुझे सोल्यूबल सॉल्ट लगेगा. सोल्यूबल सॉल्ट में कहाँ से लाऊं? सोल्यूबल सॉल्ट के लिए मुझे लेड नाइट्रेट लगेगा. लेड नाइट्रेट के लिए मुझे PbCO3 को HNO3 में ऐड करना पड़ेगा. हो गया काम डन. मिल गया ना PbNO3 ट्वाइस. इसके साथ आएगा CO2 और H2O भी. अभी इसका हमें फर्क नहीं पड़ता. वी जस्ट वांटेड दिस. अब ये मिल गया एक बार.
तो add it this, what do we want? We want PbSO4 ना, तो sulfate radical. So add it to Na2SO4. Na2SO4 is always the safest choice. मैं तो हमेशा ये डालता हूँ. Doesn't matter यार, जैसा make a pattern कि ऐसा आए तो मैं यही करूँगा, ऐसा आएगा तो ऐसा ही करूँगा. रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए. Na2SO4 will give 2 NaNO3 plus PbSO4. हो गया, मिल गया. PbSO4 from PbCO3. तो ऐसे क्वेश्चन आने के लिए मैंने जनरल अप्रोच बोल दिया है, ये आते हैं क्वेश्चन और 100% इट विल कम. सो दिस इज द जनरल अप्रोच फॉर ऑल दीज क्वेश्चन. एंड इसके आगे जो विराट दलाल टेक्स्ट बुक में दिया है वो खोलो भी मत. प्रिपरेशन, वो टाइट्रेशन का वो सब ब्यूरेड ब्यूरेड वो सब है, दैट इज ऑल नॉट इन स्कोप, सो डोंट इवन ओपन इट. तो नाउ वी बिगिन विथ 3B. वेरी शॉर्ट में, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस है, थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन, observations. That's it. So mainly what we are doing in this 3B is that we are adding salts to what? We are adding it to either NaOH और NH4OH. ये N है, अभी समझो, NH4OH. पूरा 3B वही है. सो कैल्शियम के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर सबके साथ रिएक्शंस. फर्स्ट in small quantities, then in excess quantities. So, okay. So कैल्शियम का सॉल्ट कौन सा ले? नाइट्रेट ले लो, ऑलवेज सेफेस्ट चॉइस. प्लस 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 NaOH. NaOH will give CaOH twice, which is a precipitate, or hydroxides are insoluble. प्लस 2 नैनो 3. इससे फर्क नहीं पड़ता नैनो 3 से. वी आर कंसर्न्ड with what? We are concerned with this precipitate. So ये मैंने स्मॉल क्वांटिटीज में डाला है, स्मॉल क्वांटिटीज. But on adding excess, PPT remains insoluble. ये सब important observations है, ये रट्टा ही करो, इसमें there is no shortcut. Then we have magnesium. So अभी इसका कलर भी याद रखो. They have given only white, तो okay, only white. अभी magnesium Fe2 plus wait MgCl2 ही यूज किया है ना. हाँ, MgCl2, FeSO4, FeCl3 और CuSO4 के सेम रिएक्शंस है, सेम ऑब्जर्वेशंस है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है. कलर इसका है डल वाइट. वाई एम ग्रुपिंग ऐसा ना, ताकि आपके माइंड में भी ऐसा हो कि एक एक याद मत रखो कि इसका एक्सेस में ऐसा है. ग्रुप बना लो पूरा. ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, इट इज इनसोल्यूबल इन एक्सेस. ऐसा याद रखो. उसके इंडिविजुअल कलर्स रखो याद. बट दिस इज डर्टी ग्रीन, देन दिस इज रेडिश ब्राउन. ये सब एक्चुअली होने चाहिए आपको याद ऑलरेडी. दिस इज पेल ब्लू. बस सबका यही है कॉमन ऑब्जर्वेशन. इन एक्सेस precipitate remains insoluble. Okay, so now the main thing comes with zinc and lead. So ZnSO4 plus 2NaOH, because it will form Na2SO4 plus ZnOH twice. This is gelatinous white precipitate. No one has seen this. They are saying, we are accepting. ZnOH twice. अभी यही इक्वेशन को
uh no, not here. Wait. ZnOH twice. If I again add it with NaOH, then I'll get Na2ZnO2 plus H2 2H2. So this Na2ZnO2 is a soluble salt, complex salt actually, complex salt. So इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आया? ऑब्जर्वेशन नंबर वन, gelatinous white precipitate in small quantities. When in small quantities, when NaOH in small quantities, on excess NaOH, precipitate dissolves, clear colorless solution form. बस ऑब्जर्वेशन यही है. Exactly same is with lead nitrate. अभी why are we taking lead nitrate and not lead chloride? All night only lead nitrate is soluble. Lead nitrate का भी सब same है, same as Zn. It forms Na2PbO2, lead plumbite. That's the only difference. Observations also सारे same. Observation same. Same as above. Okay. Now we add all again to NH4OH this time. So we have CaNO3 twice. When I add it to NH4OH, no reaction occurs. The reason भी उन्होंने दिया है कि concentration of OH minus ions is low, therefore no precipitate is obtained. So reaction only doesn't occur actually. No precipitate of calcium hydroxide, ऐसा याद रखो. Is low, so no calcium hydroxide. अभी Mg, same thing again. Fe, MgCl2, FeSO4, FeCl3 के सारे ऑब्जर्वेशंस सेम कलर, same observation as NaOH. So why I'm writing ऐसा ना कि आपके माइंड में भी ऐसा पैटर्न लिंक होना चाहिए कि ठीक है उसका ये और इसका ये सेम था. सो व्हाट हैपेंस इन आवर ब्रेन इज कि वो मेमोरी एक ही जगह पे स्टोर होगी कि मैं आइदर NaOH का याद रखूंगा, NH4OH का याद रखूंगा और ऐसा याद रखूंगा और एक चीज की इसका वो सेम था. मैं दो अलग अलग याद नहीं रखूंगा. So entire actually idea of memory and all is of the brain is to reduce the memory locations. जितना आप patterns बना सकते हो, जितना आप the more you find links between things, so उतना आपका दिमाग में space बचता है. So that makes you quicker and more like memory अच्छी हो जाती है उससे. So इसलिए ऐसा links बना माइंड में कि अच्छा उसका NaOH का ये था, यही इसका है. सो आई डोंट नीड टू रिमेम्बर इट ट्वाइस. आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि ये सेम है दोनों का. बस क्या है वो याद रखना है ऑब्वियसली, बट एक ही बार याद रखना है, दो दो बार याद रखने की जरूरत नहीं. नाउ इसमें ना एक चेंज आएगा. अभी कॉपर सल्फेट में लूँ, उसमें NH4OH ऐड करूँ तो मुझे कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस NH4 ट्वाइस SO4 मिलेगा. अभी ये अगेन पेल ब्लू प्रेसिपिटेट है. अभी यही इक्वेशन, यही यू आर सीइंग ना वर्ड वेयर आई एम पॉइंटिंग, ये इक्वेशन ऐसा लिखो वापस एक्सेस के लिए. ये ट्रिक है, ये याद रखो. यही इक्वेशन उल्टा लिखो. CuOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4 इधर 2 आएगा प्लस 2 NH4OH. ये मत लिखो वापस, इतना ही.
Some people then add that also. They say pura ulta likh. This will give me tetramine. This is again a complex salt. This will give me tetramine copper sulfate. It will give us what? It will give us tetramine copper sulfate. उन्होंने copper hydroxide भी दिया है but वो मत याद रखो इतना ही याद रखो बस. This is again a complex salt and this is a deep inky blue plus 4H2 plus 4H2 4H2 deep inky blue solution is important. A solution लिखो precipitate नहीं है solution it is a solution. Deep blue or deep inky blue solution is obtained on adding excess. So इसका observations क्या आएगा? When NH4OH in small pale blue precipitate, but in excess PPT dissolves to form deep blue or inky blue solution. This is done, I think. Now we have with lead, with zinc. भी zinc के साथ सेम है. उसमें उसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा? सॉल्ट. इसमें क्या बनेगा? जिंक एवरीथिंग सेम but salt form will be ZnNH3 4SO4 and observation made this is a clear colorless solution. क्लियर कलरलेस था इधर डीप ब्लू और इंकी ब्लू था उतना ही डिफरेंस है बाकी रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. अभी पीबी बाकी है. अभी पीबी में ना कंफ्यूजन होता है. पीबी NaOH के साथ एक्सेस में डिसॉल्व बट इसमें नो चेंज. सो पीबी में क्या होता है? पीबी NO3 ट्वाइस प्लस NH4OH is giving 2NH4 NO3 plus PbOH twice. Chalky white precipitate and on excess नो चेंज. ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. NaOH के साथ पीबी के प्रेसिपिटेट PbOH ट्वाइस के प्रेसिपिटेट को सोल्यूब एक्सेस जब डालेंगे NaOH इट डिजॉल्व फ्रॉम अ क्लियर कलरलेस लिक्विड बट इसमें when you will add excess no change it remains insoluble. No change means remains insoluble. Now one more thing is there in which they are reacting amphoteric metals like Zn, Al and Pb with caustic hot concentrated alkalis. So like writing them is of no use. अभी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वो. बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये इक्वेशंस एक हमेशा आएगा. किधर ना किधर तो आएगा. दे विल से टू मेटल समथिंग समथिंग आर रिएक्टिंग. उसमें भी NaOH है इसमें Zn है ऐसा. दे विल मेक सम रिएक्शन और कुछ ना कुछ करके दे. सो ये कीप इट एट द बैक ऑफ द माइंड बिफोर यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम. ये आ सकता है बिकॉज जनरली ये स्ट्राइक नहीं होते इक्वेशंस. इसके एल्यूमिनियम वाला इक्वेशन से याद रखो उसमें 2H2O भी ऐड करना पड़ता है. होप यू आर सीइंग इन द टेक्स्ट बुक व्हाटएवर आई एम सेइंग. बाकी सब इक्वेशंस तो राइट देम प्रैक्टिस देम वेल. So yeah, so this was the general chapter. इसमें nothing मतलब डिफिकल्ट नहीं है कुछ वैसे बट दे विल जस्ट से कि लाइक प्रिपेयर जैसे प्रिपेयर कॉपर सल्फेट. यू शुड रिमेम्बर कॉपर सल्फेट मतलब कैसे बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन से बनाएंगे. क्यों? हाउ? CuO प्लस H2SO4 ऐसा स्ट्राइक होना इम्पोर्टेंट है. मतलब ये अच्छा वीडियो था ये देखो एग्जाम्स के पहले भी. तो फास्ट पे देखो चाहिए तो बहुत टाइम गया है नो बट हाँ. सो दिस वाज अ गुड थिंग. This comes in the exam for 6 marks, so it comes they will give right equations or something. So
Remember, FeCl3 is synthesis, FeCl2 is di- direct combination, sorry, displacement reaction, Fe plus 2 HCl. And precipitation में soluble लगता है, PbNO3 twice is always soluble. Only lead nitrate is soluble. बाकी सब lead salts are insoluble. So these are all small details से पूरा chapter बना है. So do it well. So that is all for this chapter. It ends here. We have covered 3 chapters till now, and या सो दिस वाज इट. ये 3A ज़्यादा मत फोकस करो, मतलब है इम्पोर्टेंट है, उसका सिर्फ सॉल्ट्स का पार्ट इम्पोर्टेंट है. 3A आई मीन इज पार्ट 1, आई मीन एसिड बेसिस का. उसमें से एग्जांपल्स आएंगे, फिर वो इन मैं ऑड वन आउट वगैरह वो सब आएगा. डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल, मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल, वो सब आएगा. बट main thing is this preparation of salts, and the 3B which we just did, observations, reactions, was a बहुत important, very important. Okay, anyways, thank you.